Hello, students. So let's solve the third question now. This is a data set that has been given. Transaction ID, date, product, sales, amount, and quantity sold. और ये questions पूछे गए हैं. There are 5 questions. So let's start one by one. First question: calculate the total sales for the data set using the sum function. ठीक है? So we have to calculate the total sales. Total sales का column has been made. Done. टोटल सेल्स फाइंड करने के लिए सम यूज करना, सम तो ऐड करता है लेकिन वी डू नॉट हैव मेनी क्वांटिटीज हियर, तो फिर सम कैसे या फिर टोटल सेल्स कैसे फाइंड हो? यूज योर ब्रेन हियर. दिस सेल्स अमाउंट इज फॉर वन प्रोडक्ट and the quantity sold has also been given. So how do we find the total sales? By using sum function, we multiply the sales amount per unit with the number of quantity of the goods sold, and this is how we get the total sales. Okay, the sum function is not only used for adding, it can be used for multiple things, be it product multiplication, division, or subtraction. Okay, let's move on to the next question. Create a new column labeled month and use excess date function to extract the month from the date column. Okay, use excess date function. We have to find month, so let's use the date function. For finding the month, here in the given data we have the dates, okay, in the format day, month, and year. What we want to find is only the month of that date. So we have two methods here. First, directly month function use karo, is equal to month, bracket open, select the date, rows, enter. And in this way you get the direct number of month mentioned in the date, that is 1st of January. Done. Lekin they have asked here to find month, and we will find month in the form of text. And how will we do that? By simply using the text function. Is equal to text, bracket open, date select karo, and format text is important here. We want to find the month, right? So we will use MMM here. 3 बार M use किया, we got the month with 3 initials: Jan, Feb, Feb. What if we use 4 M's? We get the entire name of the month: January, February. In the same column, what if हमें year जानना था? ठीक है, सिर्फ year चाहिए था, so we use Y. year मिल गया. वैसे ही similarly तुम्हें day जानना था, तो डे मिल गया. और ये डे दैट इज 5th of January 2023 वीक के कौन से डे में था? मंडे था, ट्यूसडे था, वो जानना था. तो वी यूज डी. एंटर. थर्सडे था ये. सिंपल. लेकिन इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है? मंथ फाइंड करना. ठीक है, सो हम मंथ फाइंड करने के लिए M 4 times फॉर फुल टेक्स्ट. एंटर. Done. That is, we use the text function here. Text function. Third question. In new column, use an if function to identify transactions with sales amount greater than or equal to 700. Label these transactions as high sales and others as regular sales. यहाँ पर if function clearly mention किया use करना है. If function क्या है? Logical function. We use if function when we have a condition and we have to get solutions on the basis of that condition. यहाँ पर condition क्या है? If the sales amount is greater than or equal to 700, label the transaction as high sales, and if they are not greater than or equal to 700, then label them as regular sales. ठीक है, हम करते हैं. Sales
is equal to if. ये सिंटैक्स डाला if का लॉजिकल टेस्ट मतलब कुछ नहीं बट कंडीशन क्या है, सेल्स अमाउंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 700। ठीक है, ये डाल दिया। उसके बाद फर्स्ट दैट इज वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो क्या डिस्प्ले करना चाहिए, अगर ये कंडीशन ट्रू है सो वी नीड टू डिस्प्ले आई सेल्स। डन। बट इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, व्हाट डू वी नीड टू डिस्प्ले, वैल्यू इफ फॉल्स। इफ दिस कंडीशन इज फॉल्स, यहाँ पर मेंशन किया रेगुलर सेल्स डिस्प्ले करें, सो रेगुलर सेल्स bracket close, enter. Done. Next question. Use the countif function to count the number of times product A appears in the product column. Countif function is an extension of count function. Count function plus if function gives us the countif function. तो ये count function क्या करता है, नाम से ही पता चल जाना चाहिए, count function count करता है, as simple as that. Okay, for example, I use is equal to count here and select this range, 1 से लेके 5 तक का रेंज मैंने सेलेक्ट किया, एंटर किया, काउंट दिया 5। सो काउंट फंक्शन क्या करता है, बेसिकली गिव्स यू द काउंट ऑफ द सेल्स विद इन द रेंज दैट यू हैव सेलेक्टेड। यहाँ पर आई सेलेक्टेड द रेंज A2 to A6 and A2 to A6 में 5 cells थे, तो उसका count was displayed here. Okay, so in the same way, what will COUNTIF do? COUNTIF will also give you the count, but on the basis of a certain condition. Okay, and what is the condition here? Read the question again. Use the COUNTIF function to count the number of times product A appears in the product column. This is the product column. In this entire product column, we only want the count of the number of cells जहां पर product A है. So we use count if, we select the entire range, फिर condition डालना है। condition क्या है, condition है सिर्फ product A display है, वही cells का count चाहिए। product A display, product A is a text, right? और मैंने बोला था text हम हमेशा inverted commas में लिखते हैं। product A, done. count if नहीं लिखा था, sorry, count if, enter, perfect. count if the range and the condition, so ये entire range में product A 1 and 2 times है, and we get the count, perfect, done. Next, the fifth question. Calculate a bonus for each transaction if the quantity sold is greater than or equal to 10. ये condition मिल गया, इससे आइडिया लग जाना चाहिए फंक्शन यूज होगा। कंडीशन मिल गया तो उसके बाद वैल्यू ट्रू भी होगा, वैल्यू फॉल्स भी होगा। सो असाइन अ बोनस ऑफ 5% ऑफ द सेल्स अमाउंट, ये वैल्यू ट्रू होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, देन असाइन अ बोनस ऑफ 2% एंड प्रेजेंट द बोनस अमाउंट्स इन न्यू कॉलम। सिंपली लिखते हैं बोनस, इफ फंक्शन पता चल गया हमें, सो इफ लिखते हैं, कंडीशन क्या है, कंडीशन वापस पढ़ो, क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, सेम लिखो, क्वांटिटी सोल्ड कहां पर है, यहाँ पर, क्वांटिटी सोल्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 10, डन। वैल्यू थ्रू दिया है, वैल्यू इज थ्रू है 5% ऑफ द सेल्स अमाउंट, सो वी सेलेक्ट द सेल्स अमाउंट, सेल्स अमाउंट कहां पर है, यहाँ पर, सेल्स अमाउंट का 5%, ये वैल्यू थ्रू हो गया। नेक्स्ट वैल्यू फॉल्स क्या है, अदरवाइज असाइन अ बोनस ऑफ 2%, otherwise assign a bonus of 2%, sales amount का 2%, select, enter, done. In this way, done. In this way, we have solved the third question too. You have to write the steps in the similar manner and fashion जहाँ first and second sum में किया है. Okay, all the best.